See, the reluctance of the British government to accept any demands of the moderates made others disappointed. So that means the moderates were unable to achieve any real conclusion from the British, leading to dissatisfaction amongst the people with their policies and methods. They failed to get any concessions from the government. This is what I said, and this was the reason the others were really disappointed. Yes, sir. The extremists believed that the mass action was essential to achieve They Swaraj. believed that uh, mass action was essential now, Yes, sir. and there was no way left out. Yes, sir. The important leaders were Lal Lajpat Roy, Bal Gangadhar Tilak, Rupen Chandra Pal, Arushendu Bose, and Raj Naran Bose. Yes, sir, the Lal Bal Pal tried. Lal for Lala Rajpat Rai, Bal for Bal Gangadhar Tilak, and Pal for Bipin Chandra Pal. Pal Lal Pal, and as he said, we should not forget Arvindo Ghosh Yes, sir. and others. They were firmly of the opinion that These people were firmly of the opinion that now appeals, prayers, and these all appeals, prayers, and petitions, they are not going to solve the purpose, right? And not only this, going one step further, they deeply hated the British rule, and they declared that Swaraj is the ultimate goal now. Apart from that, Tilak raised a powerful slogan which appealed the people, and the slogan was, "Freedom is my birthright and I shall have it." This gave deep faith in the strength of masses. They planned to achieve Swaraj through mass action, and now the moderates were one step back, and the extremists were on the forefront. One more thing happened during those days, that was the partition of Bengal. The growing spirit of the extremism further developed. It further gave boost when the Bengal was partitioned in 1905 by Lord Curzon. See, Lord Curzon was the viceroy at that point of time, and he divided Bengal in two parts, one being East Bengal and Assam, and the other one, the leftover Bengal, Bihar, Odisha, today's Odisha and Bihar were included in the other part. This this gave the people anguish, and they now knew that it was their policy to divide and rule. Division by area wise, division amongst the Hindus and the Muslims. This made the Indians very angry, and they saw the act of partition as a challenge to the rising Indian nationalism. If people accepted this, that means the Indian nationalism would have died. This simply meant that, and this was the reason that people went for Swadeshi and boycott movement. Simultaneously, there were two movements. One was Swadeshi, the other one was boycott. Swadeshi simply meant that using things made from our industries, from India. The Indian goods were to be given a boost, and the Liverpool salt, Manchester cloth, they were to be boycotted. And believe me, within 1 year, there was around 15% drop in the Manchester cloth sale in India. This was the impact of Swadeshi movement and boycott movement.
people stressed on Vande Mataram. See, Anand Mohan Bose and Surendranath Banerjee addressed two huge meetings which drew the largest crowds of that time. People say it was around 75 or 1 lakh people gathered over there, and for the national cause, for the national unity, these two were the largest meetings. Do you know, from one meeting itself, a sum of rupees 50,000 in those days. Just understand, the value would have been more than 50 lakh today. A sum of 50,000 was collected, was raised for the movement in one single day. That was the boost to the Swadeshi and boycott movement. This further continued, but see, the Britishers were very clever. When they could not talk to these people, they had some other people with them. They were playing the game divide and rule, and this divide and rule policy they carried further when they got the formation of Muslim League with some Muslim leaders. The League showed its separatist tendencies right from the beginning. Do you know, League supported the partition of Bengal. It supported the partition of Bengal, and they started requesting the British to give the Muslims a separate electoral. And then came the Surat split. देखिए 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन में जो सूरत में था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में एक चीज़ और सामने आ गई, फर्दर डिवीजन हो गया। पहले आपने देखा कि बंगाल का डिवीजन किया, फिर हमने देखा 1906 में मुस्लिम लीग बनाने में उन्होंने सहायता करी, जो खुद बंगाल के डिवीजन को सपोर्ट कर रही थी। अब 1907 आते आते ये जो खींचतान चल रही थी एक्सट्रीमिस्ट्स में और मॉडरेट्स में, ये चरम पे आ गई और एक्सट्रीमिस्ट अब कांग्रेस से बाहर हो गए, मॉडरेट्स कांग्रेस में ही रह गए। यानी कि यहाँ से कांग्रेस के दो भाग हो गए, गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल, इस तरह से दो भाग हो गए। ये सभी आपने जो बताया, बाल लाल पाल ट्रायो, वो तो सारे गरम थे, वो सारे अलग हो गए, और जो मॉडरेट्स थे वो कांग्रेस में रह गए। और इसके 2 साल बाद आए मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। सर क्या था मिंटो मॉर्ले एक्ट? देखिए, मिंटो और मॉर्ले ये 2 नाम हैं, राइट। मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो वॉइसरॉय थे। तो मिंटो और मॉर्ले, इन दोनों के नाम से ये 1909 का एक्ट आया। ये एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने मॉडरेट्स को खुश करने की कोशिश करी। 1-2 काम किए, जैसे जो इंपीरियल काउंसिल थी उसमें भी संख्या बढ़ा दी भारतीयों की, और जो प्रोविंशियल काउंसिल थी राज्यों के लिए, उसमें भी संख्या बढ़ा दी भारतीयों की। लेकिन ये काउंसिल के पास कोई पावर तो थी नहीं,
ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात थी। हकीकत में इसमें उन्होंने एक काम और कर दिया, बहुत ही डेंजरस, और वो था मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। मुस्लिम नुमाइंदे अलग से चुनने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। तो यहाँ से एक तरह से अगर आप सही से देखो तो यहाँ से अंग्रेजों ने पाकिस्तान बनने की नींव डाल दी थी। डिवाइड एंड रूल में वो फर्दर कामयाब हो गए थे। और 1911 में लेकिन आते आते उनको एक चीज़ अपनी वापस लेनी पड़ी, वो था बंगाल का पार्टीशन। इतना दबाव पड़ा कि 1911 में बंगाल का पार्टीशन उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसके बाद आ गया 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। फर्स्ट वर्ल्ड Yes, sir. हाँ, वर्ल्ड वॉर, और इसी दौरान लखनऊ पैक्ट, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इस पर अब बात कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है 1914 में, और इंडियन नेशनलिस्ट सपोर्ट करते हैं ब्रिटिशर्स को इस उम्मीद में कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर ब्रिटिशर्स हमें इंडिपेंडेंस दे देंगे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट अपना स्वराज का एजिटेशन जारी रखते हैं, और ये वो समय था व्हेन दे स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट, होम रूल, सेल्फ गवर्नमेंट। इन दिनों में एक बड़ी पॉजिटिव बात हुई। 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ पैक्ट हुआ, उसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में समझौता हो जाता है और फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। केवल यही नहीं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी समझौता हो जाता है कि वो कॉमन पॉलिटिकल डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, और एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। देखिए यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है कि जिस मुस्लिम लीग को 1906 में अंग्रेज़ों ने खड़ा किया इस मकसद से कि डिवाइड एंड रूल सफल होगा, 10 साल बाद 1916 आते आते कांग्रेस और मुस्लिम लीग कॉमन प्रोग्राम बनाते हैं गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए। तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था। एंड ऑफ कोर्स द कमिंग टुगेदर ऑफ मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट्स was of course the most significant. सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट क्या थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट अब यहाँ से ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया। सिंपल रीजन बीइंग द इंडियंस हैड होप्ड दैट द ब्रिटिशर्स आफ्टर द वर्ल्ड वॉर would go off, they were give us independence, but this did not happen. And somewhere there in 1917 people started feeling that the Britishers will betray the Indians. The Indians felt betrayed. The war led to a huge rise in the defense expenditure, and that the Britishers were trying to increase taxes on the Indians. See, what a
comedy it was. The Britishers were fighting the war basically, and the expenditure was being taken in the form of increased taxes from the Indians. They forcibly recruited many soldiers for the war, and they also pressurized the Indian villages to supply soldiers for the war. This deeply resented by the Indians, and the Indian soldiers returned from the war with the knowledge of outside world. When you go out, you learn many things. Two things in fact. One, some soldiers were lost. So there was resentment in the villages that they were forcibly taken in the forces and they lost their lives. All the soldiers who came back, they told the villagers about the outside world. See, the soldiers went to different countries to fight the war. After all, it was World War. They crossed the ocean for the first time. And when they went there, they came in contact with other people and they knew many things about the Britishers. So there was heavy resentment all over, and I should say to the answer of your question that there were many impacts of the First World War. The First World War created an atmosphere of stir all over India. This was the impact of the World War. And then enters Gandhiji, you know, he comes to India in January 1915. But of course, he slowly enters after the Champaran Satyagraha, the Kheda, and then of course he enters the main scene that we shall be discussing in the next video. But this video we will end up with the impacts, and of course we have Shubh and other students with a song for you describing how warm the feelings were, how India was prepared after the World War, and when the extremists and the moderates united once again. Let's enjoy the song first. तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा वतन, ओ जीवन अपना सारा वतन। कूद पड़े हम हैं समर में, बांध कर अपने सिर पर कफन, हो बांध कर अपने सिर पर कफन। la la la
चाहे जितने डायर आए लेकिन हम न डरेंगे, लहराएंगे हम परचम। गदर पार्टी वाले हम हैं दीवाने, अभिनव भारत वाले हम हैं अफसाने। तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए फांसी चढ़ेंगे। तू है मेरा प्यारा वतन, ओ तू है मेरा प्यारा वतन। राजगुरु बिस्मिल सुखदेव का नारा है, अंग्रेजों जाओ ये देश हमारा है। भगत सिंह आजाद खड़े सीना ताने, नहीं थमेगी है क्रांति की धारा है। तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए घर द्वार क्या है, जीवन अपना कर दे हवन। ओ जीवन अपना कर दे हवन। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा वतन। ओ जीवन अपना सारा वतन। तेरे नाम